Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope every one of you is fine and healthy and staying safely at your homes. Let's pray for healthy Pakistan as well. Okay, so in today's lecture, we'll discuss about various dural venous sinuses. By this name, we understand that there is something related to venous blood, right? And these dura, by dura हमारे mind में क्या आ रहा है? This is one of the meningeal layer, right? So something related to the meninges and something related to the venous blood. And with the word sinuses, it comes that there is what does sinus mean? Sinus means that it is the dilated part, the dilated portion, right? So dilated portion of any vein, here as we are talking about venous system. So dural venous sinuses, something made up of dura having the venous blood, and it's the dilated portion of the venous region, right? Okay, let's move on to the objectives first. In today's lecture, we'll discuss different dural venous sinuses present in our body, in our brain, right? We'll discuss the formation of the DVS, that how it is formed, where where are these different dural venous sinuses located, where is the actual drainage of venous blood taking place, means what which veins are draining into the sinuses, and from where the sinus blood is going, the end point, right? So we'll discuss the proper drainage. The important questions which comes regarding this dural sinuses is you are asked about the paired and unpaired, so we'll talk about that as well. And one important thing, the one of the sinuses is cavernous sinus. Uski boundaries and contents, they are usually asked. So these are the main objectives. So let's start with a little introduction regarding meninges. The brain and spinal cord is surrounded by three protective layers, right? जिसका नाम हमने meninges पढ़ा है, and this you have already discussed. This has been already discussed earlier, that there are three meningeal layers. From inside to outside, if we see, means the layer which is immediate in contact with brain and spinal cord is the pia mater. Outer to pia mater is arachnoid matter, and outermost is dura mater, right? So this you must know, that from inside to outside it is pia, arachnoid and dura, and from outside to inside, if you are asked if you are writing it, so do mention it that you are writing it from outside to inside or from inside to outside, right? So from outside to inside, if you are writing that, then it should be dura, arachnoid and then pia, right? So in this picture we can see that the first layer, which is immediate in contact with the brain tissue, is the pia mater, right? This is pia mater, this one अंदर वाली जो इन्वेस्टिंग लेयर है। उसके ऊपर आ जाएगी हमारे पास एरेक्नोइड, दिस इज एरेक्नोइड, राइट? ये एरेक्नोइड हो गई, और उसके ऊपर वी कैन सी दिस इज ड्यूरा मैटर, ठीक है? सो द इनर मोस्ट इन्वेस्टिंग लेयर, ये जो इनर मोस्ट इन्वेस्टिंग लेयर हो जाएगी, दिस इज पाया, इसके ऊपर दिस इज एरेक्नोइड, एंड हियर वी हैव द ड्यूरा मैटर. So in total 3 meningeal layers. Then in between these three layers we have two potential spaces, right? We have the subarachnoid space. Now as the name suggests, sub means below, so this space must be lying below the arachnoid. When we are talking about below the arachnoid, it means this space in between which two layers, the pia mater and the arachnoid mater. Now look at this picture. This is the magnified picture from this part. So the innermost investing layer हो जाएगी जो brain tissue के साथ है एकदम adjacent, that should be pia mater. Yes, it is pia mater. Pia mater के ऊपर वाली arachnoid matter, and subarachnoid space means arachnoid के below.
So it means this space in between pia matter and arachnoid matter, right? So this potential space is known as subarachnoid space. Then we have the subdural space. Subdural, again sub means below, dura dura के नीचे, dura and arachnoid के बीच में भी एक potential space है which is known as subdural space, right? So in between the meningeal layers 3 meninges हैं, 2 spaces हैं, एक arachnoid और pia mater के बीच में, that is arachnoid subarachnoid space, and the other is in between the dura mater and the arachnoid mater, that is the subdural space, right? And there is one other potential space that is outside the dura, that is extradural, but here we'll talk about these two spaces, right? So when we look at the dura mater closely, this dura is a bilayered structure. These two layers are known as endosteal layer and the meningeal layer. Now just think of these names. Endosteal means near to the bone, and meningeal means towards the meninges. So when we talk about dura mater, the two layers of dura mater, it means the bilayered dura mater, जो दो layers हैं, एक होगी bone की तरफ, एक है meninges की तरफ, right? So the one which is towards the meninges, this is the meningeal layer, and the other which is outside towards the bone, the skull, it is known as endosteal layer, right? So dura mater has two layers, is divided into two layers, the outer endosteal layer and the inner meningeal layer. The endosteal layer is lying towards or next to the bony part. The meningeal layer is facing towards the meninges, the deeper layers of meninges. Now in this picture we can see that these are actually two layers of dura mater. The endosteal layer, see, this is the bony skull, ठीक है, and the deep inside are the meningeal tissues. ये brain tissue है, इसके ऊपर pia mater है, this is the arachnoid, right? Arachnoid. So this is the dural layer, the gray one. This is the dural layer, right? Now we talked that dura has two layers. The outer one is the endosteal layer and the inner one is the meningeal layer. What happens, these two layers, these are closely united to each other at many spaces, right? But there are few areas where these two layers are separated with each other, like this. So those areas where these two layers are separated from each other, they form a sinus which are known as dural venous sinuses, right? Now I repeat again, dura has two layers, the outer endosteal layer and the inner meningeal layer. These two layers are adherent at many sites of the brain. See, यहाँ पे दोनों adherent है, right? But there are few areas where these two layers are separated from each other, forming a sinus known as dural venous sinus, right? This is how the dural venous sinus is formed. Now within the sinus we can see few tree-like or bush-like structures. These bush-like structures are actually the aggregations of arachnoid villi, right? Arachnoid villi क्या है? Arachnoid villi are actually the projections from arachnoid matter, ठीक है, जो हमारी सेकेंड लेयर थी मेनिंजेस की, द एरेक्नोइड, वो एरेक्नोइड जो है इसके अंदर पॉप अप हो जाती है, राइट, फॉर्मिंग द एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशंस, ठीक है. So these bushy structures are actually the arachnoid granulations, which are the projections of arachnoid villi into the dural venous spaces. So aggregates of villi form arachnoid granulations. Arachnoid villi, उनकी clumping और clustering होके they form up the granulations, right? Now this is important because this is the point where the CSF diffuses into the bloodstream, right?
from the subarachnoid space, the CSF is diffused into the bloodstream at this point, right? So CSF का blood के अंदर जो pour in हो रहा है, that is at this stage, at this point, where the arachnoid villi, they are forming the clusters known as arachnoid granulations, which are popping up into the dural venous sinuses, right? यहाँ से diffusion होके CSF अब venous blood में चला जाएगा. The meningeal layer of dura mater, it sends 4 septa inwards that divide the brain cavity, right? पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, पार्चमेंट लाइक इसकी एक्सटेंशंस होंगी जो अंदर ब्रेन के कंपार्टमेंट्स में, हमारे स्कल के कंपार्टमेंट्स में जाती हैं और ब्रेन को वो जो है ब्रेन कैविटी में वो अपने कंपार्टमेंट्स बना के ब्रेन टिश्यू को फिक्स कर देती है, ठीक है. एंड वाई डू वी नीड दिस फिक्सेशन? वी नीड दिस इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन, right? It is associated with acceleration and deceleration both. So in order to stabilize the brain tissue, Allah Ta'ala has provided us with these parchment membranes formed by meningeal layer of dura mater, जो inward extensions हैं dura mater की into the brain cavity, जिसकी वजह से brain tissue is properly packed and wrapped into the actual places, right? अब ये 4 सेप्टा कौन कौन से हैं? द नेम्स आर फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, फॉक्स सेरिबेलाई and diaphragma cell. Now just look at the names. I'll show you the picture in the upcoming slides. Fox cerebri means something in between cerebral hemispheres, right? Cerebrum के hemispheres, right? Tentorium cerebelli and fox cerebelli means it is somewhere near to cerebellum, ठीक है. And the fourth is the diaphragma celli, which means it should be near where? Near sella turcica. Sella turcica कहाँ होता है? Where the pituitary gland resides, ठीक है. Sphenoid bone के पास. So we have these 4 parchment membranes. एक हमारा cerebrum के साथ होगा related, 2 हमारे cerebellum के साथ related हैं और एक हमारा sella turcica के पास है. Now let's have a look on the pictures. Here we can see the endosteal layer of dura mater, the meningeal layer of dura mater, दोनों जहाँ पे अक्सर many places पे fuse होंगे. At few places ये एक दूसरे से अलग हुए हुए हैं, forming the dural venous sinuses, having the popping up of arachnoid villi, जो कि groups में हो जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा arachnoid granulations. Means ये कौन सी, ये important क्यों है ये जगह? Because here this is the point where the CSF from the subarachnoid space enters into the blood circulation, diffuses into the blood circulation, right? Okay. इसी की meningeal layer will give deep extensions inside the brain cavity. Here we can see fox cerebri. ये 2 cerebral hemispheres हैं. इन hemispheres के center में हमारे पास एक meningeal parchment आ रही है, which is fox cerebri, right? So here in this picture, the lateral view, we can see the fox cerebri. This is the mid-sagittal view. So the fox cerebri, see, this is the parchment membrane. Meningeal layer of dura mater will give rise to this, right? So this is how it is extending from the forehead till the occiput, right? Frontal bone से लेके occiput तक पूरा जा रहा होगा fox cerebri. Then this is fox cerebri. जिस तरह fox cerebri 2 cerebral hemispheres के बीच में है, वहाँ लेफ्ट वाला, वहाँ राइट वाला होगा, यहाँ लेफ्ट वाला होगा cerebrum का हेमिस्फीयर. इसी तरह fox cerebelli, it is in between the 2 hemispheres of cerebellum, right? So fox cerebri, fox cerebelli. Now we have tentorium cerebelli.
This is tentorium cerebelli. This is actually the transverse, यू ट्रांसवर्स आ रहा होगा, जो सेरिबेलम का अपर पार्ट एंड सेरिब्रम के लोअर पार्ट को आपस में डिवाइड कर रहा, द सेपरेट कर रहा होगा, राइट. सो इट इज़ एक्चुअली सेपरेटिंग द सेरिब्रम लोअर पार्ट विद द अपर पार्ट ऑफ सेरिबेलम एंड इट इज़ नोन एज टेंटोरियम सेरिबेली, विच इज़ मोर transverse or horizontal, you can say, right. So in this picture we have seen three of the parchment membranes, the falx cerebri in between two cerebral hemispheres, falx cerebelli in between the two cerebellar hemispheres, एक उधर होगा एक इधर होगा, टेंटोरियम सेरिबेलाई, सेरिबेलम के ऊपर ये टेंटोरियम पार्चमेंट होगी जो सेरिब्रम के लोअर पार्ट को और सेरिबेलम के अपर पार्ट को सेपरेट कर रही होगी. And then this is the place of diaphragma celli. In the next picture I can see you the proper place. This is the place of diaphragma celli, right. यहाँ पे एक parchment membrane होती है which fixes the pituitary gland and all, right. Let's move forward. So how will you define dural venous sinuses? These are the endothelial lined spaces. Obviously सारे blood vessels हमारे endothelial lined होते हैं, right. So these are the endothelial lined spaces between the two layers of dura mater. Means which are those two layers? The meningeal and the endosteal layers, right? Important role is the venous drainage. This we have already discussed earlier कि इसका काम ही venous drainage होगा. अब क्या drain कर रहा है और कहाँ जा रहा है? This arrow chart is showing you that the large veins of brain, they drain into the dural venous sinuses, and from the dural venous sinus the blood is drained into the internal jugular vein, right. So this is the whole drainage, that in dural venous sinuses the large veins, the large cerebral veins are draining, and dural venous sinus से blood कहाँ जाएगा? Internal jugular vein में, right. Now these are the few characteristic points, very important. Dural venous sinuses have no valves, valveless होते हैं. These are devoid of muscular tissue. ठीक है, just use your logic क्योंकि हमने इसकी formation पढ़ ली है. It is the separation of two layers of dura mater, endosteal and meningeal, which at many places are united together and at few places they are separated from each other, forming the sinuses, right. So इसमें कहीं muscle है ही नहीं. So it is devoid of muscle tissue, it is devoid of valves, right, and it receives blood from where? It receives blood from the bigger cerebral veins, ठीक है, बड़ी bigger veins of the brain, right. Smaller obviously they'll drain into the bigger veins, and those bigger cerebral veins they will drain into the dural venous sinuses, और dural venous sinus से आगे जाएगा blood internal jugular में. ठीक है बेटा. अच्छा, ड्यूरल वीनस साइनसेस में दो चीज़ें आती हैं. एक तो आ गया ब्लड, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द सेरेब्रल वेन्स, ठीक है, ब्लड फ्रॉम द वीनस ब्लड ऑफ द ब्रेन, राइट. दूसरा इसके अंदर CSF आता है. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि CSF कैसे आ रहा है. CSF इज कमिंग फ्रॉम एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस, राइट. एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस वो जो है वहाँ से सब एरेक्नॉइड स्पेस से CSF डिफ्यूज होके आ जाएगा यहाँ वीनस सर्कुलेशन में, right. So dural venous sinuses they receive two things. They receive blood and the venous blood, and they receive the venous blood and the CSF. The venous blood is from the cerebral veins, the CSF is through the arachnoid granulations, और arachnoid villi भी अगर लिखा है तो you can mark that true, क्योंकि villi के ही clusters they make up the granulations. So in this picture we can see this red structures, they are the villi producing CSF, right. यहाँ CSF produce हो रहा है, ये ventricles है, right. ये passage of flow of CSF आ रहा है, ठीक है. Now here we can see that from the here
arachnoid granulations. ठीक है, from the subarachnoid space, this is the subarachnoid space. From the subarachnoid space, the CSF is traveling and going through the arachnoid granulations into the venous blood, right? This is how it enters into the venous blood through the arachnoid granulations. ठीक है, CSF circulation, this you have already been taught, I guess. Okay, then the next is, here is the list of various dural venous sinuses. Let's have a look at it. We have superior and inferior sagittal sinus. We have superior inferior petrosal sinus, the transverse sinus, straight sigmoid sinus, occipital sinus, cavernous sinus, and anterior and posterior intercavernous sinuses, right? So I repeat the names again. It's better you write in your books. Superior inferior sagittal sinus, superior inferior petrosal sinus, transverse sinus, straight sinus, sigmoid sinus, occipital sinus, cavernous sinus, and anterior and posterior intercavernous sinus, right? So let's move forward discussing each sinus separately. Now in this picture, look at this red arrow. Here we can see the superior sagittal sinus. ठीक है, अब इसको देखो, इसको ट्रेस करो with the points written in the text. It is located in upper fixed border of fox cerebri. ठीक है, यहाँ this was the place of fox cerebri, remember? तो upper fixed border of fox cerebri में हमें superior sagittal sinus मिलेगा. Begins anteriorly from foramen cecum and ends at transverse sinus posteriorly. ठीक है, means यहाँ पे ये transverse sinuses हैं दो. Now कौन सा? Usually the right one. Right transverse sinus में usually ये आगे continue कर जाता है, right? So I repeat again, starting from foramen cecum, going in the upper edge of fox cerebri, going till back and continuing as transverse sinus, usually the right one. It receives superior cerebral veins. ठीक है, again इसमें देखो picture, it is with reference to fox cerebri, right? So it is with reference to fox cerebri ki attachment. This is the same picture which I have shown you in the early slides. So I guess it is already very much explained. Let's move forward. So now this superior sagittal sinus at the level of internal occipital protuberance. This is the level of internal occipital protuberance, right? ऑक्सीपिटल बोन की एक, अगर आप जब ब्रेन की कैविटीज़ देखी होंगी आपने, तो प्रोसीरियरली ऑक्सीपिटल बोन जो है अंदर एक इसकी छोटी सी प्रोट्रूबेंस होती है, राइट? At the internal occipital protuberance, it is dilated to form confluence of sinuses. This, ठीक है, देखो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है सुपीरियर sagittal साइनस, जो पूरा होता हुआ यहाँ तक आएगा, बट बिकॉज द वॉल्ट हैज़ बीन रिमूव्ड, तो यहाँ से ये हमें कट हुआ हुआ दिख रहा है. एक यहाँ पे इसकी ओपनिंग दिख रही है, एक यहाँ पे दिख रही है. गेटिंग माय पॉइंट? सो ये पूरा सुपीरियर sagittal साइनस इस तरह से आएगा और यहाँ पोस्टीरियरली इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस पे इट विल फॉर्म द डायलेटेशन नोन एज कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, राइट? ओके, नाउ the inferior sagittal sinus. This inferior sagittal sinus is lying in the free margin of fox cerebri. Again वही fox cerebri है जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन था in between the two cerebral hemispheres, उसके superior margin में था superior sagittal sinus, inferior free margin में आ गया inferior sagittal sinus, right?
Now this inferior sagittal sinus, it goes backward like this, ठीक है, पीछे जाएगा. It will join the great cerebral vein or vein of Galen, इसको vein of Galen भी कहते हैं, right? Vein of Galen and inferior sagittal sinus, they will join together to form the straight sinus, right? So it will join the great cerebral vein or the vein of Galen at the free margin of tentorium cerebelli. This is tentorium cerebelli, right? And it ends at the straight sinus. This is the straight sinus, right? So vein of Galen and the inferior sagittal sinus, they both unite to form the straight sinus. ठीक है. सुपीरियर sagittal sinus राइट ट्रांसवर्स में यूजली ड्रेन करता है. inferior sagittal sinus joining the great cerebral vein will drain into the straight sinus, right? See, this is the inferior sagittal sinus. These are the veins of Galen. This is the vein of Galen. They both are joining, draining into the straight sinus, right? These red arrows are important for us in this picture. Inferior sagittal sinus, vein of Galen and straight sinus. So inferior sagittal sinus, it receives blood from the cerebral veins. अब वो कौन सी cerebral veins हैं? Superior sagittal में तो superior cerebral आ रही थी, right? Inferior sagittal sinus में it will receive the cerebral veins draining the medial surface of the cerebral hemispheres, right? So inferior sagittal sinus normally receives the medial cerebral vein drainage of cerebral veins draining the medial surface of the cerebrum. Now coming to the straight sinus, it is located at the line of junction of falx cerebri. ठीक है. Now see the picture. This is falx cerebri, junction of cerebri with tentorium cerebelli. ये tentorium cerebelli है, ठीक है. सो जंक्शन हो गया, ऊपर से फॉक्स सेरिब्राई आ रहे हैं और ये टेंटोरियम सेरिबेलाई है, राइट? स्ट्रेट साइनस उसके जंक्शन पे है. बन कैसे रहा है स्ट्रेट साइनस? इट इज ऑलरेडी बीन डिस्कस दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ग्रेट सेरिब्रल वेन एंड इंफीरियर sagittal साइनस, राइट? नाउ दिस स्ट्रेट साइनस इट एंड्स बाय फॉर्मिंग द ट्रांसवर्स साइनस. ठीक है, ये है हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस, यहाँ पे भी है, उस साइड पे भी है. नाउ राइट ट्रांसवर्स साइनस हमने ऑलरेडी बात कर ली, वो सुपीरियर sagittal साइनस आगे कंटिन्यू हो रहा था, राइट? दिस इज द राइट ट्रांसवर्स साइनस. इस तरह जो लेफ्ट वाला ट्रांसवर्स साइनस है दैट इज यूजली द कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेट साइनस. ठीक है, उस साइड पे स्ट्रेट साइनस जो है टर्न हो जाएगा और लेफ्ट ट्रांसवर्स बना लेगा, राइट? सुपीरियर sagittal साइनस, सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स इसमें ड्रेन कर रही हैं ब्लड, आगे आके वो राइट ट्रांसवर्स बना रहे हैं, ठीक है. इंफीरियर sagittal साइनस जो मीडियल सरफेस ऑफ ब्रेन सेरिब्रम को ड्रेन कर रहा है, ग्रेट सेरिब्रल वेन के साथ मिलके स्ट्रेट साइनस बना रहे हैं. स्ट्रेट साइनस इट विल कंटिन्यू फॉरवर्ड एज लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस. ठीक है, अब ट्रांसवर्स साइनसेस पे आ जाओ. क्योंकि ये राइट एंड लेफ्ट है, इट मीन्स दीज आर द पेयर्ड साइनसेस. दे बिगिन एट द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस. ओके, अब इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस बताओ. मैं क्लास में होती तो ज़रूर पूछती, सो अभी मैं ही बता देती हूँ. सो इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस हमने अभी कहाँ पढ़ा है? जहाँ पे सुपीरियर sagittal साइनस आके एंड हो रहा था और वहाँ पे डायलेट हो रहा था, फॉर्मिंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस, राइट? सो कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस के पॉइंट से ट्रांसवर्स साइनसेस स्टार्ट हो रहे हैं. राइट वाला जो है इट इज़ नॉर्मली द कंटिन्यूएशन ऑफ सुपीरियर sagittal साइनस, लेफ्ट वाला इज द कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेट साइनस, राइट? नाउ द ट्रांसवर्स साइनसेस अब ये भी कहीं जाके एंड होंगे. दे एंड टू फॉर्म द सिग्मॉइड साइनस here, right? यहाँ पे देखो, this is the sigmoid sinus, this is the transverse sinus, right?
अब ट्रांसवर्स साइनस आगे जाके कंटिन्यू होता है सिग्मॉइड साइनस में, ठीक है। अब हम सिग्मॉइड साइनस की डिटेल्स पढ़ते हैं। Sigmoid sinus is the direct continuation of transverse sinuses, ठीक है। इधर इस पिक्चर में we can see this is the sigmoid sinus which is the continuation of transverse sinuses, and this sigmoid sinuses they go through the jugular foramen and become continuous to the internal jugular vein, which is the end drainage of all this blood, right? So superior sagittal पीछे तक गया, कॉन्फ्लुएंस बनाया और कॉन्फ्लुएंस से राइट ट्रांसवर्स बन गया। इंफीरियर सेजाइटल ये वेन ऑफ गेलन के साथ ज्वाइन करके इट विल फॉर्म द स्ट्रेट साइनस, जो कि आगे बन जाएगा जाके लेफ्ट ट्रांसवर्स, ठीक है, लेफ्ट ट्रांसवर्स बन जाएगा। दिस इज लेफ्ट ट्रांसवर्स, राइट। लेफ्ट ट्रांसवर्स एंड राइट ट्रांसवर्स अब वो आगे जाके अपने रिस्पेक्टिव सिग्मॉइड में ड्रेन करेंगे, and the sigmoid they will drain into the internal jugular, right वाला जो है right internal में, left वाला left internal jugular में। I hope I have made it clear. Now there is one other small sinus known as occipital sinus, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? It is attached to the margin of Fox cerebelli, ठीक है। देखो ये कॉन्फ्लुएंस था, कॉन्फ्लुएंस राइट एंड लेफ्ट ट्रांसफर्स जा रहे हैं, ठीक है। आई होप यू आर फॉलोइंग माई पॉइंटर। और कॉन्फ्लुएंस के जस्ट नीचे वी कैन सी कि एक हमारे पास साइनस है छोटा सा, दिस इज नोन एज ऑक्सीपिटल साइनस। ये ऑक्सीपिटल साइनस ड्रेन्स इनटू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस, फिर कॉन्फ्लुएंस से उसी तरह ब्लड ट्रांसफर्स, फिर सिग्मॉइड, फिर इंटरनल जुगुलर, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल साइनस ये जाके अपना ब्लड कॉन्फ्लुएंस में ही पोर इन कर रहा होता है, राइट। Now come to the one of the most important sinuses, that is cavernous sinus. It is lying in middle cranial fossa around the body of sphenoid bone, right? The extension is not usually asked, so you must know that it extends from superior orbital fissure up to the apex of petrous part of temporal bone, right? So this is the area of cavernous sinus, right? Tributaries means इसके अंदर कौन कौन सी veins आके drain हो रही है। So it drains superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein, inferior cerebral vein, sphenoparietal sinus, and central vein of retina, right? So all these veins they drain into cavernous sinus. The normally the important questions normally are, okay, now we'll discuss the boundaries. So the borders of cavernous sinus, if we see anteriorly हमें मिलेगा superior orbital fissure, posteriorly will be the petrous part of temporal bone, medially it will be covered by a sphenoid body of sphenoid bone, laterally the cavernous sinus will be having the meningeal layer of dura mater which is running from the roof to the floor of middle cranial fossa, right? parchment membrane बनाने के लिए जो आ रही होती हैं, right? Okay, roof में हमें मिलेगा meningeal layer of dura mater that attaches to the anterior and middle clinoid process of sphenoid bone, and floor पे will be seeing the endosteal layer of dura mater that overlies the base of the greater wing of sphenoid, right? So we'll look all these boundaries in this picture. See, medially the body of sphenoid bone, right? Laterally the meningeal layer of dura mater, फ्लोर बन रहा है एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर से, इधर हमने पढ़ा था ना अभी फ्लोर एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर दैट ओवरलाइज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, दिस इज द ग्रेटर विंग, राइट। फ्लोर उससे बन रहा है। एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट इस पिक्चर में हमें इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, यहाँ होगा, एंड हमारे पास है posterior the petrous part of temporal bone, right? So these are the boundaries. उसके बाद we'll discuss the contents, which is another important question regarding
cavernous sinus. In contents, we have internal carotid artery, sympathetic nerves plexus, oculomotor nerve, trochlear nerve, ophthalmic nerve, and maxillary nerve. So in this picture we can see all the contents very clearly, right? This is the internal carotid artery, these are the nerves, ये वाली हमारी oculomotor है, this is trochlear, this is ophthalmic, and this is maxillary, right? Sixth nerve B, it is considered as a content of cavernous sinus. ठीक है. Okay, we can see the boundaries also very properly in this, right? Now, where does this cavernous sinus drain? It drains into superior inferior petrosal sinuses. अब इन sinuses का नाम हमने अभी discuss नहीं किया था, right? So these are also one of the sinuses. Petrosal sinuses हमारे पास जो होते हैं, these are located in the petrous part of temporal bone. Superior petrosal sinus जो होगा drain करेगा transverse sinus में. Inferior petrosal sinus will drain directly into the internal jugular vein, right? This is the chart showing the paired and unpaired dural venous sinuses. It's better you write it in your notebooks right now, because this is normally asked in OSPs. Either write 2 or 3 of the examples of paired and unpaired dural venous sinuses, right? और MCQs में ये names लेके पूछ लेते हैं, ठीक है बेटा. अच्छा, इसमें कुछ साइनसेस वो भी हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं. दीज आर स्मॉलर साइनसेस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू मस्ट नो द नेम्स. दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड इन दिस क्लासिफिकेशन चार्ट, राइट? अदरवाइज उसमें क्या ड्रेन कर रहा है और वो कहाँ जाके ड्रेन कर रहे हैं वो इतना नहीं पूछते. अभी इस लेक्चर में हमने जितने साइनसेस कवर किए हैं, नॉर्मली वही वाले सारे साइनसेस पूछे जाते हैं. वही इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर कौन सी वेन्स ड्रेन कर रही हैं एंड where the blood from those sinuses is going, right? So that whole formation को पूरा venous network वो main कहाँ से बन रहा है, superior sagittal, inferior sagittal, फिर transverse, then sigmoid, बीच में straight sinus भी आया था, और फिर internal jugular, right? तो this you all must know. फिर confluence था पीछे, वो बना था superior sagittal से, उसमें नीचे से occipital आके drain कर रहा था, राइट? और फिर केवर्नस का ये आपको पता हो जाए, ये पेट्रूजल साइनसिस में के थ्रू ड्रेन होके सुपीरियर पेट्रूजल ट्रांसवर्स में जाएगा, इंफीरियर जो है डायरेक्टली इंटरनल जुगुलर में जाएगा, राइट? नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ईमेल दैट टू मी ऑन dr.sahrish@gmail.com. it's dr.sahrish sahrish@gmail.com. I'll inshallah reply to all of your queries if you have any, right? Till then, Allah Hafiz, take care, meet you in some other lecture now. Allah Hafiz.